Hello everyone and welcome to my YouTube channel The United Road. Sunday evening. नाइट क्या ही बोलूं यार 8:30 बजे है तो अभी तो नाइट नहीं बोलूंगा ऑब्वियस सी बात है बट थर्ड साइनिंग यार सेलिब्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ हॉयलैंड के बारे में अभी और बात करनी है। उनाना के बारे में भी बात करेंगे यार, कल हमारा मैच है उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट एम्ब्राबाट। तो इन द रीसेंट फ्यू डेज कुछ दिनों से भाई इट्स गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन द मार्केट। सारी चीजों पे नजर डालेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट थोड़ा बहुत कल के मैच के रिगार्डिंग एंड व्हाट शुड बी ट्राई अगेंस्ट डॉर्टमंड। तो जयान भाई गुड इवनिंग, रवि भाई, करण भाई, सबको गुड इवनिंग है। एम्ब्राबाट आइसिंग नहीं होगा भाई, एम्ब्राबाट इज अ नीड। जहान भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आइसिंग हो जाएगा कि अगर सेंटर बैक का भी हम बैकअप ले आए, that would be icing, but Amrabat is an absolute must, is an absolute need. So भाई सेल करना ही पड़ेगा, we don't have any other option. If we are not selling we will be in trouble. पृथ्वी भाई वेलकम, कौशिक भाई राम राम। भाई जो भी ज्वाइन कर रहा है सबको पता है भाई हाउ इट वर्क्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भाई अपना ट्विटर एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल मैंने लिंक ही पिन कर दिया है। मैंने बोला भाई अगर किसी को आलस आ रहा है कि भाई लिंक नहीं है टाइप करना पड़ेगा, मैंने लिंक ही डाल दिया है कि भाई तुम लिंक पे क्लिक करो ज्वाइन कर लो। समीर भैया थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो आइसिंग तो मनु है अपना भाई। देखो अगर वो चला ठीक है ये सीजन कोई दिक्कत नहीं, नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, लेट दैट गाय बी अवे फ्रॉम द प्रेशर। ठीक है 18 साल का है वो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। मेरे हिसाब से तो पहले भी हो सकता है बट वही वाली बात है, वी आर नॉट गोइंग टू बज ऑन आवर प्राइस। ऐसा नहीं है कि हम उठा के इसको दे देंगे 30 मिलियन में। मैक्टोमिने इज गोइंग टू गेट अस एटलीस्ट 40। आई थिंक डॉनी माइट स्टे। मुझे लोन पे देने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। एनीवन हु वांट्स टू गो सी डॉनी गो ऑन अ लोन, आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू गेट हिम सोल्ड। आई वुड लव टू सी हिम, यू नो, if we are letting go of him, but I would love to see some money. I don't want to see Donny going out on loan. Anybody who wants Donny to go out on loan, and as I said, भाई मैं अपनी बात भी करूंगा. I really want to know from you guys as well. Anybody who wants to go see Donny go out on loan, मैं पैसे की बात कर रहा हूं. अगर पैसे आते हैं तो जाने दो, ठीक है. पैसे आ रहे हैं तो जाने दो, बट ये नहीं कि भाई लोन पे दे दो, 5 मिलियन में 10 मिलियन में दे दो. कोई लॉजिक नहीं है उसका. नो टू लोन बिल्कुल भाई मेरे हिसाब से लोन का कुछ फैक्टर नहीं बनता, कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं बनता। भाई तुम लोग बताओ, मुझे तुम लोगों से भी जानना है। एज आई सेड मैं भी बात करूंगा। आई वांट यू गाइस टू बी इन्वॉल्व इन इट एज वेल। तो मुझे बताओ भाई, मेरे हिसाब से डॉनी रखना चाहिए बिकॉज ब्रूनो का एक तो बैकअप भी हो जाएगा, प्लस मैक्टोमिने विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है आराम से 40 मिलियन आ जाएगा। नो टू लोन, आउटराइट सेल, नो लोन। एग्जैक्टली एक्साइटेड टू सी गर्नाचो। बिल्कुल भाई गर्नाचो इज एन एक्साइटमेंट मशीन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लोन नहीं पैसे दो। निखिल भाई आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री विथ यू। शुभद भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई सेलिंग नॉट गोना विन, एब्सोल्युटली मैं यही चाहता हूं भाई, मैं यही चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई आई एम गोइंग टू टॉक बट आई वांट यू गाइस टू गेट इन द कन्वर्सेशन एज वेल। आशीष भाई हिला के रख दिया। ओपनहाइमर ओपी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ठीक है गाइस मैंने क्या बोला है, एक चीज, इंस्टा एंड ट्विटर लिंक्स आर पिन्ड। ठीक है तो भाई देख लो, इंस्टा और ट्विटर के लिंक जो है वो मैंने पिन कर दिया है। मैंने पोल पे मैक्टिव वी शुड कीप डॉनी। फेयर एनफ है। देखो एक मुझे लॉजिक वाली बात है ना, यू नो आई वांट टू टॉक विथ यू गाइस अबाउट एवरीथिंग, यू नो दैट राइट. वी टॉक एवरीथिंग इन डेप्थ, दैट्स व्हाट वी डू. कीपिंग डॉनी, यू नो, कीपिंग डॉनी विल गिव अस एन ऑप्शन, बैकअप खिला सकते हैं। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि उसको बेचो मत, आई एम जस्ट सेइंग अगर उसको जाने दे रहे हो तो लोन पे मत जाने दो यार, बिकॉज वी विल नीड अ बैकअप, और बैकअप के लिए देने पड़ेंगे पैसे. फॉर मी इट मेक्स नो सेंस एट ऑल. फेयर इनफ शेख भाई, फेयर इनफ.
Well, you are here, Merlin. We are also going to talk about Hojlund. Don't worry about that. Don't worry about that. We missed you on the stream. You could not make it, but that's fine. You are here, and as I said, we are going to keep on talking about Hojlund as well. Ambrabat, I am going to talk about Ambrabat's news from Pedula. Pedula is the one who's getting everything right this window for United when it comes to the Italian news. Okay, so I am going to talk about Pedula as well, and we will see how it goes. It's Hojlund, Ayushman bhai, welcome to the stream. Keep Donny. Fair enough. आशीष भाई मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर इसको बेचना है ना, let him go, but get the money. Giving Donny on a loan, paying partial wages makes no sense at all. All good, KL7 bhai, all good. How are you? Chataru bhai, welcome. Ambrabat, most likely in the upcoming week. Before the first Premier League game, I expect it. Because we have already spent almost 180 million, out of which we have recovered around 20 million. ठीक है, तो अभी भी हमें पैसा रिकवर करने हैं बिफोर वी कैन इन्वेस्ट. तो मैक्टोमिने का पैसा पूरा प्रॉफिट में जाएगा. Jehan bhai, Amrabat can play both as number 6 as well as number 8. So he is a choice we should definitely look at. Yeah, for Donny, if we are getting 25 million plus, I will let him go. Because अगर जाने दे रहे हो तो उस पैसे में उसका बैकअप ला सकते हैं. If you are letting him go on a loan, we are doomed. Because Manu will be out for 3 months. You are letting Fred go, then you let Donny go. Then we will have McTominay, Amrabat, Casemiro, Eriksen, Mount, and Bruno. So we will have to get the best out of this team. As I said, we have made our playing 11. We have every piece together for our playing 11 at this point of time. But वही वाली बात है, to challenge City, to challenge, for the title, to push them for the title, you have to be very, very, good with your bench as well. It's as simple as that. मैं कोई rocket science नहीं बोल रहा हूँ. Every United fan knows it already. So, या तो हमें फिर वैसा सीजन चाहिए, the season that Liverpool got. It's as simple as that. No views. नहीं चाहिए भाई. Luke Shaw का backup नहीं चाहिए. We already have Malacia. We already have someone like Alvaro Fernandez getting through the ranks as well. So left back we are sorted at this point of time. बिल्कुल. उसके पोजीशन में नहीं है भैया. मैं वही बोल रहा हूँ. खिला सकते हैं. But the thing is, धोनी के पैसे मिलने को अभी पता नहीं लग रहा कुछ. Whoever wants Donny at this point of time, they want him on loan. और लोन हमारे लिए feasible बिल्कुल नहीं है. The money that we were about to get from Henderson, that's also looking like we are not going to get this window, and that's a bummer because that was 25 million, pure profit. And at this point of time, we are not getting that money. So we need to have a strong bench, absolutely. All okay, Bandhan bhai, how are you? Shai bhai, yes, we have paid a bit extra for Hojlund for sure. But Italian teams are very tough negotiators. And now that we have already paid, I am just hoping that he can come out and he can without the price tag, he can just play his own natural game the way he wants to play. I don't want anything else. Simple as that. Chalo. As I said, make sure you take part in the poll. Make sure you keep liking, sharing, and subscribing. And those who want to connect on social media, I have pinned the handles. Simple. I'm not going to ask you to look at the banner or all. I have pinned the handles. So if you feel like, you can follow me on both the social media. At the same point of time, guys, tomorrow in the morning, 5:40, I am doing the watch along for our game against Dortmund. Matt, Sanket bhai, how are you? Malina, we all want to, believe that, to be very honest. But yeah, English media will be on his case from day one because he's coming from a different league and he is not English. So they will be all over him from the very first moment. They will be like, oh,
You know, every chance that he misses, they will be all over him. Venkat bhai, welcome to the stream. Good evening, bhai. Good evening. Of course, focus should be on performing. Simple as that. Uh Hojlund Sally might bring out something out of Martial too. Samir bhaiya, we can all hope. At this point of time, Martial is like a gone case. So for Martial, we can always just hope, nothing else. I am expecting Tuesday as well. Kaushik bhai. Ayush, welcome to the stream. I think we will challenge properly for the Premier League trophy next season. If we are not challenging next season, I will be very disappointed. 1 year, I will give this team to gel. Simple. नैनेश भैया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. मेरे हिसाब से 17 दे देना चाहिए नैनेश भैया. फ्रेड वाला नंबर दे दो. नहीं खेल सकता भाई. ही कैन नॉट प्ले राइट बैक. सॉरी, ही कैन नॉट प्ले सेंटर बैक. राइट बैक में ही इज ब्रिलियंट. सेंटर बैक नहीं है वो बंदा. मार्शल कहीं नहीं जा रहा भाई. रोमानो इज इटालियन. भाई देखो, वही वाली बात है. फॉर अ 20-year-old इज वेरी फिजिकल, इज वेरी mentally very strong. So that's what we need for this team. Simple. The character should be there. जाएगा भैया, इसको निकालेंगे. इन दी एंड शायद डेस्परेशन में 15 की जगह 10 में ही बेच दे, बट बेच देंगे. ओपनहाइमर वाज एब्सोल्युटली ओपी यार. आयुष भाई, जबरदस्त मूवी. कोई भी नंबर दे दो यार, कोई भी नंबर दे दो. ऐसा नंबर दो जिससे ज्यादा प्रेशर ना हो. सिंपल. जेमी जैक्सन को कौन पूछ रहा है भाई? जेमी जैक्सन को कौन पूछ रहा है? जिनको कुछ न्यूज नहीं होती ना, वो यूनाइटेड के टारगेट में 25 मिलियन और ऐड कर देते हैं. क्या बोलूं मैं? नहीं भाई, ये नहीं होगा. ये नहीं होगा. I don't think so. I think Ambrabat will be the final one. If we can get rid of Maguire, then we might sign another one. Otherwise, we won't. OPRs, I didn't understand. I didn't get that. भाई देखो, I am not going to compare Harry Kane and Hojlund at any stage of their careers. I just want Hojlund to perform the way he want to, the way he can, the way the manager wants him to. कोई कंपैरिजन नहीं है भाई. केन 22 की एज में क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था. We have paid 75 plus add-ons for Hojlund, and I want Hojlund to perform. No comparison with anybody. Just go out on the pitch, showcase what you can do. Simple. As I said, we need a center back. I have been crying for a center back, but looks like it's not going to happen. Ravi bhai is surplus to us. To be very honest, he's very surplus to us at this point of time. No. I just said, it was just a brilliant movie. It was just a... भाई वही वाली बात है फिर. For Taremi, we need to sell players. If we can manage to sell Henderson as well as McTominay for the price that we want, अगर दोनों के मिला के 65 मिलियन हमको मिल गए, then we can definitely do it. फिर हम कर सकते हैं आराम से. फिर कोई टेंशन नहीं है भाई. Hopefully, Malin. Mohan bhai, thanks a lot for joining. How are you? Guys, those who are joining, just a simple, humble request. Make sure you like, share and subscribe at the same point of time. I know it's a Sunday evening. ठीक है, फैमिली टाइम है बहुत लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है भाई. Whoever is joining, thanks a lot. At the same point of time, as I said, make sure if you want to follow on Twitter as well as on Insta, feel free. We can talk on any platform यार. जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे बात करें. We have various platforms so we can go out and we can talk. Hello bhai, welcome to the stream. According to Padula, Rajan bhai, we have already made the bid, but I am looking forward to another, to few more reports before I can say it's 100% true. Although Padula has been absolutely spot on so far this window. चलो
सैप सैप नहीं समझा भाई मैं, हम जीत गया। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन यार एथलेटी, बिकॉज शायद भाई वी यू नो मार्शियल इज स्टिल 26। इफ वी डिसमिस द कॉन्ट्रैक्ट वी आर लेटिंग गो ऑफ ऑलमोस्ट 20 मिलियन इन ट्रांसफर फीस। मतलब 15 से 20 मिलियन तो मिल ही जाएंगे यार मार्शियल के, रोदो के भी। 20 मिलियन इन ट्रांसफर फीस प्लस जो हम उसको 2 साल के उसके वेजेस देंगे 100 अलग। मतलब मिनिमम मिनिमम भी हमें 30 मिलियन का लॉस है। प्लस ही इज एब्सोल्युटली लव्ड बाय द ग्लेजर्स, आई डोंट नो व्हाई, सो दे आर नॉट गोइंग टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट। भाई लिंक यहाँ पे नहीं भेज सकता, मेरे को मैसेज कर देना इंस्टा या फिर ट्विटर पे, मैं वहां पे नंबर शेयर कर दूंगा। भाई मुझे तभी मजा आता है टू फॉलो ब्रूनो, आई डोंट फॉलो ऑल द यूनाइटेड प्लेयर्स, क्योंकि यार उनका पीआर चलता है यार, पीआर की टीम उनको फॉलो, पीआर की टीम उनके ट्वीट्स करती है, दैट्स इट। बट ब्रूनो आई डेफिनेटली फॉलो, भाई वी ऑल नो ब्रूनो डज हिज ओन ट्वीट्स। सो अगर हम हैंडो मैकटोमिने आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। कौन सा मैच भाई? Rajan bhai, we are all in the same boat, but unfortunately it's not gonna work. So let's see. Exactly. अरे thanks a lot for joining in अनुज भाई, thanks a lot. सो रहा था भाई, सो रहा था मैं। एल क्लासिको नॉर्मल डेज में होता है भाई, मैं तब मिस कर देता हूँ, ये तो फ्रेंडली था, नहीं मिलेगा भाई। अनिल भाई, it's better to keep him as our backup. You know, if the deal is collapsing with Nottingham Forest and no one is willing to pay the amount of money that we want, it's better to keep him as a backup. प्री सीजन है यार, प्री सीजन में डजंट मैटर एट ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कोई सी भी टीम हो। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर समीर भैया, क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है, बट वही है ना, इफ यू कैन नॉट इवन प्ले 10 गेम्स इन अ सीजन, फिर क्या ही फायदा, वो फिर क्वालिटी होके भी ना होने वाली बात है। भाई देखो, मुझे नहीं लगता दे कैन पुश, आई थिंक दे विल गेट हिम नेक्स्ट सीजन, ठीक है, मेरे हिसाब से पुश नहीं कर पाएंगे वो। मेरा एक रीजन है यार, आई बिलीव दैट द मनी दैट दे वांट, यू नो, क्या बोलते हैं, पीएसजी, नो वन इज गोइंग टू पे, और 100 मिलियन में नहीं देंगे यार वो, अनलेस और अनटिल बिल्कुल ही उनको लग जाए कि यार जीरो से बढ़िया ही है कुछ भी, तब शायद दे दे। अगर ईगो पे रखेंगे तो मैड्रिड को इस साल नहीं देंगे, अगले साल देंगे, एक साल एम्बापे को बिठा देंगे। इन दोनों के जाने से कुछ होना भी नहीं है भाई, पैसे तो मैकटोमिने लाएगा, इन डॉनी और फ्रेड को मिला के जितना नहीं आएगा उससे ज्यादा मैकटोमिने लाएगा, एंड मैकटोमिने अमराबाट आने के बाद ही विल बी सरप्लस। शेयर माय वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई वही है, अगर वो लेंगे तब तो ना, अब जबरदस्ती तो नहीं डाल सकते दानिश भाई। बिल्कुल, शायद भाई ये हमेशा रहता है, मेजोरिटी जो ब्रूनो के अगेंस्ट है ना, दे आर पॉगबा फैन बॉयज। ये आया, इसने पॉगबा की रेल लगा दी, जो पॉगबा से सारे एक्सपेक्ट करते थे वो काम ब्रूनो ने करके दिया, तो ऑब्वियसली निखिल भाई कोई नहीं दे रहा उतने पैसे। भाई ध्रुव भाई, पता है व्हाट दे आर सेइंग, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ ऑब्लिगेशन टू बाई। मैं मेरे को ऑब्लिगेशन टू बाई में भी अगर ले रहे हो तो ले लो, ठीक है, बट दे आर सेइंग the obligation to buy will only come into effect if he is playing 30 games, and we all know how that works। 30 गेम्स बोला है, खिलाएंगे 25, बोल देंगे भाई वापस हो गया, हम ऑब्लिगेशन टू बाई नहीं ले रहे, तो वही वाली बात है, तो ये सारी चीजें हरकतें नहीं करनी, वह वही वाली बात है यार, इंटरेस्ट तो हर किसी का किसी में होता है यार, यू नो, मिल थोड़ी जाते हैं बंदे।
I don't think they have given up on Caicedo. Kaushik bhai, I still want to wait. Rubbish bhai, rubbish, nothing at all. भाई सऊदी का ऑफर स्टिल स्टैंड्स फॉर एम्बापे एम्बापे ने बोल दिया मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल वो बात ही नहीं कर रहा हैरी कहीं नहीं जा रहा भाई बेचने वाला बात तब आएगा ना जब प्लेयर जाना चाहता हो प्लेयर बोल रहा मैं यहाँ पे मुफ्त के पैसे खा के खुश हूँ राजेश भाई आई थिंक इट विल हैपन बिफोर द फर्स्ट गेम you know he might play the pre-season but for the Premier League season he will be there exactly Nikhil bhai we have already spent 160 million for now ठीक है मैकटोमिने बेचेंगे तो हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा ठीक है अगर उसके बाद हमने हेंडरसन बेचा तो उसमें हमारा एम्ब्राबाट आ जाएगा so that's what we are trying to do at this point of time शाश्वत भाई आर्सेनल फैंस को छोड़ो यार they are a laughable bunch they are a laughable bunch नहीं भाई क्यों खेलना काउंटर प्रवीण भाई क्यों खेलना काउंटर नाउ वी हैव प्लेयर हु कैन कीप द बॉल we can be absolutely deadly with possession and even in transition counter attacking game at times we will play obviously but our game is going to be possession based simple transition and counter attack में difference होता है भाई so प्रशांत भाई बिकॉज उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है with Brighton and Brighton said he is not moving this season and he is not a finished product anyway you know at this point of time Prashant bhai so for him for his development staying at Brighton makes sense seriously if Chelsea takes Lavia I will be you know jumping with joy of course we have paid over you know a bit much so I think they will pay 100 million they need Caicedo yaar they have absolutely sold their entire midfield so for Caicedo they will have to pay they missed a trick at this point of time fragile fair enough no we have not breached the FFP because भाई हमें जो है ना ये बुक बैलेंस करना है before next season ठीक है तो even if we are selling now even if we are selling in January we are good with that so right now we have not so far we are 40 million over what our budget was but then as I said we sell one player and it will be done you know so not a problem at all at this point of time hopefully well Geos welcome to the stream we cannot sell Henderson as Geos the problem is you know Henderson will be sold but on our terms not on Forest terms you know Forest thinks that we are fools even the obligation they are trying to put they are like the obligation to buy will only come into effect if he plays 30 games which is outright rubbish as simple as that बिल्कुल राजेश भाई बिल्कुल भाई मगवायर वाज फिफ्थ चॉइस तुम थर्ड चॉइस की बात कर रहे हो मगवायर वाज फिफ्थ चॉइस लास्ट सीजन शॉ प्लेड ओवर हिम obviously he said you know he said exactly Eric Ten Hag that you know the United way we want to play Ajax and he's not even thinking about that he just want to entertain the fans he just wants to make sure that the you know way we used to play football that's where we reach simple I am sure that it would fall because they are absolutely you know negotiating on a ridiculous terms at this point of time. Pradeep bhai, welcome to the stream. Bhai, we have pace to burn up front. It's as simple as that. You know, with Hojlund, with Rashford, with Garnacho. Garnacho from the bench is going to be a game changer. Simple as that. Exactly, मैं वही बोल रहा हूँ ना. Absolutely, he can. As I am saying, for Nottingham Forest, put up a price of 30 million. For others, put up a price for 25 million. Don't let anybody dictate us in the window where we can get a good deal for a keeper. Simple. By Emi Martinez, he was 31 at this point of time.
And भाई is a decent goalkeeper. You know, उसके theatrics ज्यादा हैं, so people think, oh, he's a world class goalkeeper. He's not a world class goalkeeper. He's a very good goalkeeper, but he is not with the elites, with the likes of Ederson, Alisson. You know, Onana is there. Then we have Courtois over there. These are elite goalkeepers. So that's why no one is going to get someone like Martinez. Okay? As I said, age is also a factor. 31. And my Villa मुंह फाड़ देगी. Villa बोलेगी दे दो हमें 50 million. सारे बोलेंगे रखो अपना गोलकीपर अपने पास. So there are a lot of factors that's to be taken care of. You know, that's to be thought of when you are going for any player over the age of 30. Simple as that. And guys, as I said, those who want to connect with me on social media, on Twitter or on Insta, you know, either of the platforms, make sure that you just click on the link in the pinned comment and you will get directly to my account. Simple as that. Hendo to Brentford, I will take any day यार. 25 million दे दो. 25 million दे दो. भाई कहीं भी जाए यार. कहीं भी जाए, we need 25 million this window. That will make our job very easy. It will make our job so easy. जो हमारा हेंडरसन का पैसा होगा उससे एम्ब्राबाट आ जाएगा. ठीक है, और मैकटोमिने बेच के हम एफएफपी पे बिल्कुल नॉर्मल. ठीक है, फ्रेड को बेच दिया तो वो हमारा विंडो का प्रॉफिट हो जाएगा भाई. फ्रेड को बेच के और थोड़े बहुत और अगर हमने बेली बेच दिया तो उसमें भी टडेमी आ जाएगा बिना मार्शियल को निकाले. So there are a lot of things that could be done if we play our cards right at this point of time. Absolutely. Samir bhai, I am expecting 10 to 15. 10 to 15. I will be happy with 10 to 15. Next season, I would love to see 20. Exactly. वो उसका ओवरऑल गेम उतना नहीं है भाई. पेडुला इज सेइंग प्रत्यय भाई दैट बिड जा चुकी है. ठीक है, पेडुला बोल रहा है बिड जा चुकी है, बट वी विल वेट एंड सी. In the meanwhile, as I said, guys, click on the link which is pinned. Make sure that you are joining me on Insta as well as on Twitter as well. So, Sridhar bhai, welcome to the stream. Hi, Hojlund will start from the game one. We have seen Erik ten Hag trusting the players from the first day. Anthony came in, Anthony started straight away. Hojlund will start from the very first game. We are not going to make Anthony wait. Oh, sorry, Hojlund wait. भैया नहीं है काफी. समीर भैया नहीं है काफी. मार्शियल पे अगर पूरा सीजन अगर हम सोच के बैठे कि काफी है तो हम बर्बाद हो जाएंगे. If he stays fit, he is good enough. बट उसका फिटनेस का बहुत ज्यादा इशू है. नेक्स्ट लेवल. कैनॉट ट्रस्ट हिम. नो सरप्राइज भाई. केन के सपने मत देखो श्रीधर भाई. केन इज नॉट हैपनिंग. क्लियर. वेलकम टू द स्ट्रीम मैन. आई एम फाइन. हाउ आर यू? भाई अगर बायन ने टीम में उठा लिया ना हैरी केन, look out for Bayern यार. They have every position sorted apart from the striker. If they get Harry Kane, they will be one of the teams to beat. Abhishek bhai, hopefully. It was just a pre-season gimmick and hopefully it's never happening again. Yep. He will be starting against Wolves यार. I won't be surprised. Bench से तो definitely ही आएगा, but I won't be surprised if he starts. He will be there for the game against Lens as well, in my opinion. लेंस और बिलबाओ में से एक गेम तो खेलेगा ही वो. भाई केन का सीन पहले भी नहीं था यार. यू नो, केन वाज नेवर गोना हैपन. केन के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है. मार्सेलो, नेमार, फैक्ट्स. क्लब लेवल पे तो भाई अब क्या ही बोलूं. बाक्षी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. Bhai, I think we will do it, but we have to make sure that we are selling as well. Sales are very, very important. Without the sale, it's gonna be very, very tricky. Very, very tricky. भाई क्लब क्यों साइन करेगी भाई? बंदा फिट नहीं रहता ना यार. That's the biggest problem. If a player is not fit, why would anybody take him? That's the thing.
फ्रेड 12 भाई, फ्रेड के 10 लगा लो। मैक्टोमिने 45 भाई, 40 मिनिमम, 40 मिनिमम। 40 से कम में मैक्टोमिने नहीं जा रहा भाई। मैक्टोमिने विल एंड अप स्टेइंग बट वी आर नॉट लेटिंग हिम गो फॉर लेस देन 40 एंड वेस्ट हैम वांट्स हिम। 45 हम मांग रहे हैं। इन माय ओपिनियन वी विल लेट हिम गो टू वेस्ट हैम फॉर 40। अरे बिल्कुल हाई रॉन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई दोनों में से एक गेम में हम फर्स्ट चॉइस के साथ जाएंगे। अब देखने वाली बात है कौन सी गेम में जाते हैं। अगर सेल हो गया तो एफएफपी का कोई सीन नहीं है भाई। If we end up selling the club, we will have a debt will be gone, and we will have, without even sales, you know we will have the money under control. अगर अभी हम सेल कर देते हैं, शेख जासिम इज द ओनर, वी विल हैव 60 to 70 million extra, which will cover our entire spending, spending in the window so far. So if that happens, then we don't have to worry about even selling anybody. भाई ये तो फैक्ट है, बट वही वाली बात है ना, सुनने में अच्छा लगता है बट ये होगा नहीं। भाई आई टेक फ्रॉम फुटबॉल बस स्टोर यार, इंस्टा पे पेज है, वहीं से लेता हूं। भाई मेरे आई विल गो फॉर दिसासी। टोडीबो आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड। दिसासी फॉर अ बैकअप चलेगा। नेक्स्ट सीजन वी माइट गो फॉर इवन अ बैकअप फॉर समवन लाइक वरान। सो सीबी हमें चाहिए होंगे भाई, अगले 2-3 साल में हमें 2 सीबी चाहिए ही चाहिए। like anybody who takes, Henderson, I just want 25 million. Looks like the deal with Nottingham Forest is getting out of hands, because they are not willing to pay the amount of money that we want. And even for a loan, they are saying obligation to buy, okay, but this many games, then only the obligation will come into effect. It's rubbish. So at this point of time, looks like Henderson might end up staying, but it's football. We have seen crazy things happening. So let's see. So as I said, 25-year-old clubs are in the reckoning for someone like Henderson, but we have to be quick up, quick up this sale, to be very honest. Ambrabat by in the next 7 to 10 days, not before that. Squad building up, absolutely. Ricky bhai, welcome to the stream. By Lindelof is untouchable. मैनेजर ने बोल दिया लिंडेलॉफ इज अनटचेबल, लिंडेलॉफ इज नॉट गोइंग एनीवेयर। भाई तुम्हें वैसा स्क्वाड प्लेयर चाहिए। ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही वर्क्स हार्ड, ही नोज व्हाट द मैनेजर वांट्स। यू नीड समवन लाइक लिंडेलॉफ। और लिंडेलॉफ पे ना उतना पैसा भी नहीं आएगा। इंग्लैंड मगवायर को जो है ना, इंग्लैंड टैक्स लगा के बेच देंगे। भाई दिसासी, एज आई सेड, इज नॉट अ ह्यूज अपग्रेड ऑन मगवायर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट अपग्रेड। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मगवायर के बाद हम बिल्कुल किम मेन जे लेवल का बंदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल बिट पेसी देन मगवायर। पोजिशनिंग वाइज मेरे को ठीक लगता है। आई हैव सीन मोर ऑफ हिम। एक होता है कि भाई तुम मोनाको का गेम देख रहे हो, मोनाको के गेम्स मैंने देखे हैं, बट आई हैव ट्राइड टू एनालाइज हिज गेम इन द लास्ट फ्यू वीक्स एज वेल, ओवरऑल वैसे भी। सो डेफिनेटली एन अपग्रेड ऑन मगवायर, बट फिर वही वाली बात है कि मगवायर से जितने हमें मिलेंगे उससे थोड़े से हमें ज्यादा ही लगाना पड़ेगा टू गेट दिसासी। नहीं चाहिए भाई, बुंडेसलीगा का भी कोई प्लेयर नहीं चाहिए भाई। they have lot of money getting in as well. They stayed in the Premier League, TV money is getting in, and not every owner is like Glazers bro. So they have the owners who are willing to pump the money, and they have let go of lot of players already, so they have cut down on wages as well. So let's see. I won't say anything for sure, Pradeep bhai, but let's see. Why, as I said, anybody who wants to take him for 25 million. Exactly. Facts hai bhai. 2 seasons max. 2 seasons max. I have been saying this.
तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वे वी वांट टू सी, द वे वी वांट टू प्ले, उसमें लिंडेलॉफ इज वेरी वेरी की। तो हम अगर फेंकेंगे तो भाई मगवायर ही जाएगा बाहर। भाई दे वांट बोथ, उनको चाहिए दोनों। बट एज आई सेड, अगर इनका प्लेयर होगा तो इनको चाहिए भाई 120 मिलियन। व्हेन इट्स अबाउट आवर प्लेयर देन दे आर लाइक, यू नो, मगवायर हमें 20 मिलियन में दे दो, हेंडरसन हमें सॉरी मैकटोमिने हमें 30 में दे दो। नो नेगोशिएटिंग भाई, नो नेगोशिएटिंग विथ अ क्लब लाइक वेस्ट हैम। 45 हमने बोला है, मिनिमम से मिनिमम 40 तो चाहिए, बिकॉज यू गाइस मेड अ बिड फॉर 40 मिलियन फॉर गैलेगर, फकिंग गैलेगर 40 मिलियन। वेरी अनलाइकली, बट लेट्स सी भाई, तनिष भाई लेट्स सी। नहीं नहीं भाई, ग्लेजर्स ने पैसा थोड़ी डाला है निखिल भाई, अंडरस्टैंड दैट। हर हर टीम के पास क्रेडिट फैसिलिटी होती है, ठीक है। एंड वी हैड आवर बजट 120 मिलियन प्लस सेल्स, ठीक है। अभी अगर हम हेंडरसन और मैकटोमिने को बेच देंगे तो वी विल बी इन सरप्लस। एग्जैक्टली क्ले भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, कि जब दूसरे तुम्हारे प्लेयर्स लेने आओ तो तुम बोल दो भाई 120 मिलियन से कम पे हम बात ही नहीं करेंगे, और दूसरे तुम्हें चाहिए भाई 15 मिलियन में, 20 मिलियन में, इनको रुला दो, वेस्ट हैम वालों को रुला दो, सिंपल। एंटनी, शुभम भाई, आई विल स्टार्ट विथ एंटनी, बट लेट्स सी। They need a goalkeeper. They are selling Turner. Ramsdale is not good enough. If you want to win the Premier League with the likes of Onana, Ederson, Allison, Ramsdale is not going to do the job. बिल्कुल Nikhil bhai, in my opinion, at this point of time, nothing is done. Qatar has, they have played their cards. At this point of time, it totally depends on someone like the Glazers. ठीक है? Hello, Arvind bhai, welcome to the stream. How are you? I feel in the first game versus Bruno as 8, Sancho as 10. Nah, इतना रिस्क नहीं लेंगे हम। वी आर गोइंग टू प्ले विद अ सेटल्ड मिडफील्ड पहले गेम से। मिडफील्ड में ओवररन होने वाली बात नहीं चाहिए भाई। देखो, अंडर द टेबल वो सिटी काम करती है, वी डोंट ऑपरेट दैट वे, ठीक है। अब देयर वाज अ स्मॉल ब्रीच एंड वी एंडेड अप पेइंग 300,000। सिटी आर सिटिंग विथ 115 चार्जेस, दे आर डूइंग नथिंग। आदित्य भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल? चलो भाई, सब अच्छे ही रहना चाहिए भाई। जो भी घुस रहा है फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते जाओ। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 75 लाइक्स, एंड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी की। वन थिंग इज सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बट भाई अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट गेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, देन व्हाट्स द पॉइंट। मैं भाई कोई जीनियस, आई एम नॉट अ पंडित, सेल्फ प्रोक्लेम्ड पंडित नहीं हूं जो बहुत सारे लोग समझते हैं अपने आप को। आई एम जस्ट अ नॉर्मल फैन हु लाइक्स टू लर्न फ्रॉम यू गाइस, एंड वॉट एवर नॉलेज आई हैव मैं शेयर करता हूँ भाई, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं यहाँ पे बन के बैठ जाऊं सेठ कि मैंने जो बोल दिया वही होगा। वही भाई, ये तो सीधा बोल देते होंगे ना भाई, ये तो सीधा बोल देते होंगे, सच बता रहा हूँ। ये सीधा बोल देते होंगे भाई, इक्विटी ले लो, ठीक है, यूएई में इक्विटी ले लो, फ्लैट व्लैट ले लो, सैलरी छोड़ो, ऑल गुड भाई, ऑल गुड। अभी सही चल रही है भाई ये, सिर्फ लिंक हुआ। देखना अभी मैनचेस्टर के मेयर ने क्या बोला, इज लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल विद कतार इन्वेस्टमेंट। अबे चूतिया बनाना बंद करो यार, ठीक है। कतार के मॉल में जाना है, ठीक है, वर्ल्ड कप वहां पे जाके देखना है, वहां जाके कबाब खाने हैं। वी आर नॉट कंफर्टेबल, साला तुम्हारा सिटी जो है तुम्हारा, ठीक है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, अभी जली पड़ी है। नथिंग निशांत भाई, नथिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन विथ हेंडरसन। भाई आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय अल्वारो फर्नांडिस। भाई ये तो सबको पता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल नो, यस वी हैव स्पेंट 180, और हमें 20 मिलियन वापस भी मिले हैं यार एलांगा से,
और हमें मिला है टेलेस से। ज्यादा कुछ नहीं भाई, ज्यादा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आदिल भाई, जस्ट अ प्री सीजन। नहीं, नॉट नॉट नाउ। अब हमने ले लिया भाई, अगर 70 मिलियन 75 मिलियन दे के भी अगर फॉल्स नाइन खिलाना है तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है। So in few games we might play him, but Hojlund is the answer at this point of time. Guardiola आएगा भाई, डेफिनेटली आएगा। नहीं नहीं भाई, ज्यादा कुछ नहीं। हेंडरसन वाले टॉपिक पे वी वर टॉकिंग भाई, अच्छे डिफेंडर्स हैं बट दे नीड टू स्टे फिट। दे आर यंग गुड डिफेंडर्स बट दे नीड टू स्टे फिट। You cannot keep on getting injured. Tunzabe was good, Mengi was good. Look at where their career is going. Wilfish is good, Bennett is good, but then they have to stay fit as well. बिल्कुल, एग्जैक्टली, 100%, 100%, let them cry भाई। I am getting to know that it's about 70 to 75,000, 70 to 75,000 per week। नहीं भाई, तब भी नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इन शॉर्ट, जितना हमें मगवायर से मिलेगा उससे हम शायद 10 मिलियन एक्स्ट्रा ऊपर खर्च कर पाएंगे फॉर अ सीबी, और उस रेंज में या तो तुम तो डीबो ले सकते हो या दिसासी ले सकते हो। किमिंजे अगर हम लेते तो फिर हम आम्राबाट नहीं लेते। So that's how it works at this point of time. भाई दिसासी वी वर इंटरेस्टेड, बट देन मगवायर ने बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब मगवायर जा नहीं रहा तो दिसासी में इंटरेस्ट लेके क्या करोगे? टिल द टाइम वी आर नॉट सेंडिंग दिसासी आउट, इट्स नॉट गोना वर्क, सिंपल। भगवान जाने भाई क्या समझते हैं। ये बोल रहा है मैं प्रूव करूंगा, अपने आप को प्रूव करूंगा। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू प्रूव, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। एग्जैक्टली, मैं क्या बोलूं भाई। भाई एज आई सेड, अगर हमने, गाइस सुनो, 70 मिलियन है बेस प्राइस। कोलोमुआनी का बेस प्राइस ही था 80 प्लस, ठीक है? तो and Kolomwani is your not outright striker. I have been saying this, Adil bhai. We can disagree, it's totally fine, part of football. But Kolomwani is not outright striker. Kolomwani जो है वो he likes to get back, ठीक है? उसको विंग से खेलना पसंद है भाई। 15 मिलियन एड ऑन्स में है, स्ट्रेस मत लो ज्यादा। ला लीगा में भाई कौन लोगे? मुझे नाम बताओ तनिष्क भाई। बिल्कुल, बॉल कैरिंग सीबी चाहिए। लीचा इज अ वेरी गुड कैरियर ऑफ द बॉल एज वेल, वी हैव सीन दैट, बट एक और चाहिए भाई। आई विल टेक अ विन, कोई सा भी विन चलेगा भाई। फ्रेड के लिए गालाटासराय आर ट्राइंग, दे हैव ऑलरेडी मेड 2 बिड्स, वी हैव रिजेक्टेड बोथ द बिड्स, ठीक है? सिंपल सी बात है। उसको हम भाई गालाटासराय को व्हाई वुड बी लेट हिम लेट फ्रेड गो फॉर 7 मिलियन यार? कोई लॉजिक नहीं है। गालाटासराय भी वैसी ही है भाई, इनको अपने प्लेयर बेचने हैं महंगे में, दूसरों के चिंदी में चाहिए इनको। भाई गाली दे दो, ये नाम मत बोलना बस शुभम भाई, गाली दे दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नाम मत बोलना यार। जिस दिन मेरे को लोग ये नाम बोलने लगेंगे ना, मैं लिटरली मेरे को चैनल बंद करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को एजेंडा चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। जो जो जिस तरीके का प्लेयर है आई विल टॉक अबाउट इट, एजेंडा नहीं चलाऊंगा मैं। हाँ Neon, thanks a lot, man. Thanks a lot. Thanks a lot for showing up regularly on the streams as well. Otaku said, let's keep Maguire this year. Okaku, just a simple question. Have you heard any big team going after Antonio Silva? That guy is valued at 70 million euros, okay, by Benfica. And he has done nothing exceptional. We have seen how Benfica likes to overrate their players, put expensive clauses in that. I have seen Antonio Silva. Antonio Silva at this point of time is very raw. Not someone with whom we can spend 70 million on. Simple. भाई ये बारसा नहीं छोड़ेगा,
Diomande is a good shout. Diomande is a good shout. More experienced, more in the range where we can go. But I think we will be needing a starter for next season. Varane will be 1 year older as well, Otaku. So we will be basically needing two center backs, as mentioned in the comments. I don't think it's gonna happen in one window, but let's see. क्या ही बोलूं भाई मैं, और ये फिर बोलते हैं कि वी लव द क्लब, क्या बोलूं मैं. फिलिक्स, एग्जैक्टली. फिलिक्स हो गया. 100 million was too much for Nunez as well. Enzo Fernandez 120 million. I would like to see Disasi this window. ठीक है, अगला विंडो देखते हैं. मुझे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है भाई. आउट ऑफ रीच बिल्कुल. गाइस किसी का कमेंट मिस हो जाए वापस से डाल देना. थैंक यू आदित्य भाई. मैं वही बोल रहा हूँ यार, मैनेजर नोज व्हाट ही इज डूइंग. समवन लाइक, ठीक है, क्या नाम है यार उसका, गेही इज समवन आई लाइक एज वेल. बेला को चाप आई लाइक एज वेल, बट थोड़ा सा इश्यू है यार विथ इंजरीज. बिल्कुल. नाउ यू आर टॉकिंग भैया. इसको उठा के लाओ. गेट दिस गाय इनसाइड द क्लब. ही इज मेकिंग दोस डील्स मैन. 125 million, 100 million, 126 million. From where? I have no idea. Absolutely. Araujo is one of the best center backs in the world at this point of time. By 126 million. Don't put the money out of the equation. 126 million. Bilkul. That's what I'm saying. Trust the manager at this point of time more than anybody else. More than anybody else, just trust the manager. Whatever he has brought in so far, it has worked. So let's just trust the manager. Yes भाई, 2 महीने इंजर्ड है वो, अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा. I would have taken Pochettino यार. Pochettino और someone like Enrique. दोनों में से कोई एक. Benfica, Dortmund, Ajax, even Porto. आदिल भाई, these are top level selling clubs. अरे शुभम भाई कोई दिक्कत नहीं है यार. I know कोई दिक्कत नहीं है. No, Otaku, we are not talking in that way. We are talking because, the scouting is done in a brilliant way as well. Enzo Fernandez was a brilliant find. Simple. भाई Pochettino, because Pochettino has a good reputation of building teams. और हमें टीम ही बनानी थी from the scratch. ठीक है, वो तो we got Erik ten Hag. Otherwise, as I said, I would have wanted Enrique. He is, at this point of time, quicker he get out of Atleti, quicker he can make a career. Simple. Come on, guys. Come on, keep hitting that like button. We are very, very close to 75 likes, sir. Guys, I have one thing to share as well. If anybody is interested, let me know. Anudha bhaiya, welcome to the stream. First of all, thanks a lot for joining in. Guys, anybody who wants to join the membership, please let me know. I am putting up the link. Give me 1 second. Anybody who wants to join the channel as a member, please do that. No pressure, man. No pressure on anybody. But yeah, anybody who feel they wants to join, feel free. In the meanwhile, keep liking, sharing, and subscribing, as I said. Hojbjerg या Hojlund भाई. Ajax बिल्कुल. My Klopp, we missed out, definitely. Bhai, as I said,
I was looking at team building. I know Poch is not a winner, but I wanted to get the winning, get that team together. It was all over the place. बिल्कुल आयाक्स को बोल सकते हैं 100% आयुष्मान भाई 100%. I never wanted him over ETH. Lot of guys did. So fair enough. As I said, fair enough. I'm just saying at that point of time, I would have taken anybody else, who could have built the team. Yeah, I don't dislike Poch. भाई हॉयबियर या हॉयलैंड, ये हॉयबियर थोड़ी हमने खरीदा है, हमने हॉयलैंड खरीदा है. हाँ भाई देखो वही वाली बात है ना, ओले वाज नॉट ऑथोरिटेटिव. ही वाज लाइक भाई मेरे को दे दो, सामने से मना हो गया तो ठीक है कोई और दे दो. एरिक टेन हाग इज लाइक जो मैं मांग रहा हूं मुझे वही चाहिए, दैट्स इट. होपफुली कौशिक भाई, होपफुली. आदिल भाई देखो वही वाली बात है ना, अब जो नहीं हुआ अब वो नहीं बोल सकते कुछ. कुड हैव बीन अ गुड साइनिंग, कुड हैव बीन अ बैड साइनिंग. सो वेंकटेश भाई, भाई संडे मना रहे हैं आज. वेंकटेश भाई नो वे टू बी सीन आज. भाई मैं चेंज नहीं कर सकता, ये प्रॉपर एक वॉल है, मेरे को ये पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा. मैं वही बोल रहा हूँ, द साइनिंग्स दैट एरिक टेन हाग वांट्स ही वांट्स. He is not moving on to the second choice targets. Simple as that. It was not on Ole. It was not on Ole, man. It was on the board. Ole offered Haaland when he was even the manager of Molde. He offered Haaland to United for 4 million. 4 million. And our board said no. Just imagine. Bhai, we are absolutely nowhere यार. Behind the scene, we are absolutely क्या ही बोलूं यार, मेरे को हंसी आती है. We are just hoping for that, Shweta. You're not the only one. We are all hoping for the same thing. अच्छा ठीक है, समझ गया भाई. बहुत पहले लगाया था, मेरे को ध्यान में भी नहीं था. भाई दैट्स व्हाई तभी मैंने इसको भाई इतना बड़ा करवाया था. I could have tried with a green screen, but I didn't want. Shubhat bhai, I understood your point now. Guys, tomorrow game is at 6:30 in the morning. I will be here at 5:40 in the morning. All right. Feel free to join. Feel free to talk about the game. In the meanwhile, keep liking the stream. We are very close to 75 likes. Ayush bhai, I am totally with you. I am totally with you. Selling Donny and not getting a backup would be a mistake. If we are selling him and we can bring in a profile, that would be fine. But letting Donny go on a loan, that would be a huge mistake. By dekho, he loved money. Fact is that. Fact is that. Sabko, in the end, before he left, United board managed the offer that PSG gave, but he still moved to PSG. So भाई यही हो जाता है, ठीक है. Whatever he said, and to be very honest, we dodged a bullet. He barely played after he left us. His thigh issues, it was getting very high season by season. So expectation for next 2 seasons, Otaku, to be very honest, this season I will take a top 3 and a cup. I will take FA Cup. Carabao we have already won. I would love to see a FA Cup and next season go all out for the title. I am totally with you. Absolutely. People need to understand that. It was all about passion. He was not, a great player. He was a good player. Thank you, Bhaiya. Thank you. USA का आखिरी game है यार. After that, the Lens game is at 5:30 in the evening for us. That's brilliant. Don't know.
डॉनी को बेच के लाने का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। टरेमी को डॉनी बेच के टरेमी क्या करोगे लाके? डॉनी बेच के दूसरा प्रोफाइल लाना पड़ेगा। टरेमी के लिए मार्शियल निकाल दो, देन इट मेक सेंस। निकेतन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ लेट नहीं होता। Even if guys can, even if you guys miss the stream, make sure that you like it later on and watch it for a few minutes. भाई देखो, his mind was absolutely heart and mind was set with Barcelona. ठीक है, we had no chance for Frankie de Jong. People need to understand. It was not in our hand. That guy just wanted one team, and that team, ठीक है, was by the name of Barcelona. That's it. भाई वही है ना, इतना वेजेस है ना यार। ही इज ऑन 250,000 per week. No one is going to take him. It's as simple as that. If he is not reducing his wage, no one is going to take him. Expectation for this season, trying keeping the gap to first as ठीक है agreed agreed। भाई ये पागल है बंदा यार, ये आदिल भाई। I don't know what he wants to prove. I absolutely don't understand what he wants to prove. छोड़ो यार, इनके बोलने से अगर हम सोचने लगे ना तो फिर हो गया। राजन भाई मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक। भाई न्यूकासल इज ओन्ड बाय कतारी फंड, सॉरी सऊदी। They are owned by Soma by Saudis, so for them it's not even a problem. No, they don't. All of a sudden, Ramsdale, who was better than Onana, now Raya is better than Onana. Absolutely, Shweta. Absolutely. Maguire is nowhere near the team, Otaku. That's the thing. Maguire is our 5th choice centre back. Even if we are playing, the second team, Shaw will be starting over him, most likely. We might play Malacia on the left-hand side if he's fit and Shaw as a centre back. We have seen that our manager wants left and right. So I won't be surprised. Obviously, few games will be played by Maguire, but at the same point of time, I have no hopes that he is going to be making inroads as a third choice or a fourth choice, unless or until someone like Lindelof, he gets injured. Then obviously we don't have any choice. Top 3 Carabao Cup will be a bonus CL quarterfinal. Come on, guys. Realistic expectations. Now that we are talking about this, let's talk about your realistic expectations. What do you think United are going to achieve this season if we sign Ambrabat? I am just talking if we sign Amrabat. I'm not getting along to the next signing. By Harvey Barnes is a very good winger. Team relegate हुई है doesn't make the player bad. Relegate by Madison भी हुआ था. Madison is gone for 40 million. Harvey Barnes for 38 million is a very good deal. Sama bhai. That is, he got quality. Gordon का तो चलो बात हटाओ, but this guy got quality. I won't be surprised, Otaku. But then the experience of Varane and the positioning of Varane is next level. Chalo Tanish bhai, fair enough. I am hoping for the same, Samir bhaiya, but let's see. Maguire will play in substitute. Arey Rajan bhai. Fair enough, bhai. As I said, I like the way you have said, try keeping the gap to first position in PL as small as possible. Fair enough. FA Cup and quarterfinal. I am expecting quarterfinal as well. Anything above, that's a bonus. Fair enough, Shweta. Fair enough. Top 3 again, FA Cup, quarters. Chalo, bhai. Chalo. That's what I love about this community. Everyone knows their stuff. Simple. And guys, one thing which I always do, that
super chat holders and membership. So we have Anita Bhaiya as a new member. So Anita Bhaiya, thanks a lot for joining as a new member. And we have Neon with a super chat. Neon, thanks a lot, man. You have started coming on the stream more often, and it really, it's really good. Great to see you. Well, पैसा मिल रहा है, चले गया सऊदी. चलो, fair enough, Samir bhaiya. We as fans, even with the signings, we have to be realistic. Next season, I think we should go all guns blazing for the title, PL title. Knowing Eric Ten Hag right now, he will go for it this season as well. But next season is an absolute must. PL top 3, FA Cup runner-up, UCL quarter-final if player remain injury-free. Fair enough. Adil bhai, fair enough. Bang on point. Luke Shaw will play in Maguire position most likely. That's what we have seen in the past season. That's why I said that Maguire at this point of time is like a fifth choice. So I don't know what he wants to prove. I am not able to understand. So, I'm great to see you now. Expectation यार PL में mostly सबके top 3 ही है. What do you make of Villa? Think they will? I don't think so. I don't think so. Like Villa have made good signings. Diaby is good. Tillemans is a good backup for free. For a team like Villa, then they have Pau Torres as well. So I think they have done well, but good depth added by Newcastle. Tonali, as long as I feel that they have paid over for him, Tonali is a good signing, and at the same point of time, they have also signed Harvey Barnes as well. So I think it's good. It's good. Hojlund, Martial's time is over, Shweta. He is going to be a backup, and he will be sold if we get a bid. Hojlund is our number 9 for the future. Yes, but they have CL football. तो उनके पास भी conference league है यार. And conference league is even tougher for a team like Villa. वो Thursday nights खेलेंगे. Then they will have to play on a Sunday, on a Monday. Fair enough, भाई. देखो Champions League, I don't think we are going to win, but Champions League is like a lottery. ठीक है, you get a good run, you never know. Glazers अच्छा, फिर भी मैं एरिक टेन हाग ही रखता भाई. Why to try to change anything which is not broken? Simple. मैं बिल्कुल ठीक अंजिल भाई, how are you? Thanks a lot for joining in. This year competition is too high. Arsenal, Liverpool, United, City, Newcastle. But don't forget the likes of Brighton. Don't forget the likes of Villa. Chelsea, they will make signings and they will win the mix. I'm not saying they are going to, get into top 4, but they can, definitely damage the prospect of other teams. 2 seasons, yes. The number of chances we create, if it's prolific enough in 2 years, yes. Fair enough, yeah. As I said, he has been backed heavily and he has done well so far. But yeah, still, jury is out because getting Champions League for 1 season and then getting it back to back. Let's see. हाँ भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. The terms that Villa want, the terms that Nottingham Forest want is making no sense at this point of time. So no point giving someone talented as Dean Henderson to them and not even earn money. It's zero, it's illogical at this point of time. I don't think he should be given number 9 straight away. Give him some time. Absolutely. Top 6 आ सकती है, absolutely आ सकती है. If they make good signings and the players click, they will challenge. They might challenge for top 4 as well. As I said, Pochettino with Premier League experience and with a team which is not expected to do a lot at this point of time, he can be dangerous. Absolutely. They get rattled by us signing players. Imagine the rattled faces of them when we actually have the Premier League.
हाँ भाई हो गया चेंज, इट्स एक्स नाउ। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, यू नो। तो टीम्स भी ज्यादा है अब यार यूसीएल में, वी गाइस नो इट। तो क्या ही बोले, चलो देखते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ गौरव भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक साल हुआ है उसको पीएल में आए हुए। अरे सी, रोनाल्डो फैंस, they are the ones who will keep on attacking Erik ten Hag. That's it. Fair enough, Kaushik bhai, fair enough. Bhai, for someone like Ambrabat, I don't know, but Hojlund should be given number 17, in my opinion. Let's see what we give him, but 17 makes sense to me. हाँ समीर भैया, नेक्स्ट सीजन टॉप 5 आर इन सीएल। सीएल में टीम ज्यादा हो गई ना, नाउ सीएल विल हैव मोर टीम्स। इंग्लैंड हैव गॉट मोर वन मोर स्पॉट। इसका एक आर्टिकल भी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सब लोगों के साथ। एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली गिव नंबर 1। ठीक है गौरव भाई, एज आई सेड, सबके अपने अपने ओपिनियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोनाल्डो इज नॉट अ सेंट। ठीक है, लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, बट ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ बैड द मैनेजमेंट इज व्हेन ही वाज बेंच्ड। ठीक है, if he wanted to talk about how the bad the management is, he should have done it from the first day. People who want to see Ronaldo as a messiah, that he talked, no he didn't. He only talked because he wanted a way out. और जब खुद ही जाना है तो कुछ भी बोल के चले जाओ। एब्सोल्युटली कोई एडिटर नहीं है भाई, कोई एडिटर नहीं है। कोफिशिएंट के हिसाब से भाई अभी 100% गारंटीड नहीं है, बट मोस्ट लाइकली इंग्लैंड एंड स्पेन विल गेट द 5th टीम। चलो भाई, दिसासी भी गया भाई। they have Fofana injured, so they have got दिसासी। लो भाई, चेल्सी ने दिसासी उठा लिया। चलो अब भाई, मगवायर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इटली को क्यों दे रहे हैं पता नहीं भाई, इटली को जाना तो नहीं चाहिए। लेट्स सी, आई विल डू द सेम, बट लेट्स सी भाई, इट्स ऑन द मैनेजर। 100% अग्रीड मर्लिन, 100%। छोड़ो भाई, यप, दिसासी टू चेल्सी इज 100% डन गाइस। I am sharing the tweet from Donny. He just confirmed it. Why they lost out on Fofana? They wanted a CB, so they have got Disasi. Fofana is ever going to play football back again? We have no idea. We have already signed Hojlund. Good news, and we are going to get Ambrabat as well. By as I said, as fans, we might even give them time, but the press will be after that. Press will be after them from the very first moment. Simple. That's why as I said, he's not a huge upgrade, but he's an upgrade. No, he's not mad, bhai. He just lost Fofana for the entire season most probably,
and they don't have CBs. You know, Koulibaly is already gone. Fofana is injured. Okay, Thiago Silva is not going to play all the games. You know, Chaloba is there. So, guys, match is at 6:30 tomorrow. I will be here at 5:40. Disasi will be out and out starter for them. So, ACL भाई, ACL. Fofana suffered another ACL injury. उसको last season भी ACL हुआ था. This season again ACL. Exactly. HP भी गया. You know, उसको भी वो एज अ थर्ड सेंटर बैक खिला देते थे. ये क्या बोलते हैं? Reece James is also injured at this point of time. So there are a lot of injury issues that's going on with Chelsea. भाई देखो, किक करने के लिए ना उनके पास अभी लीडरशिप नहीं है. ठीक है, they have good players, they can do damage, but I don't think they can do consistent damage this season. At least next season we will see. भाई देखो, every chance that he misses, हरवीर भाई, English media will be licking their lips to talk shit about him. It's as simple as that. Yep, he is not going anywhere. Disasi was the one we could have replaced him with, but Disasi is gone now. It's over. Fair enough. As I said, you know, he whatever he has done in the transfer window, it was absolutely clueless. I don't think Potter even wanted 2 or 3 of those players. देख लिया प्रदीप भाई, देख लिया. But I think his career might just be over. Biggest mistake by Chelsea. Is this a blow? Bro, to be very honest, I won't call it a blow because Maguire was not willing to leave anyway. You know, he was not looking to leave. But now, you know, even if he makes his mind that he wants to leave now, I don't think we have a replacement for him. So now, even if there was a 10% chance of Maguire leaving, at this point of time, it's like 1%. नहीं जाएगा भाई. If he has made up his mind early, we might have tried, you know, extensively for someone like Kim Min-jae. ठीक है, extensively try कर सकते थे हम. But even our management knows that he's not willing to take a pay cut and he's not willing to make a move, so he stays. Dev Verma bhai, देखो, to be very honest, Disasi was linked with us. Disasi was linked with Newcastle. Chelsea lost Fofana. They could not see anywhere else, so they got Disasi. I think he's a good player, you know, and he will do well for Chelsea. Just like I think he would have done well for us as well, but he's gone now. Exactly, bhai. Totally agreed. भाई देखो, फोटो किसी की भी लगाए, सपोर्ट अगर यूनाइटेड को कर रहा है तो भाई आई हैव नो प्रॉब्लम. सिंपल सी बात है भाई. आई डोंट वांट सिल्वा. Why anybody want us to target Silva for 70 million? I don't know. That guy is targeted by nobody at this point of time. Nobody. No one rates him as a 70 million player. Silva for 40 million, I will take him. Not for 70 million. ठीक है, sure, Kaushik bhai. Enjoy your dinner. I will go for, you know, a bit longer and then we will see. If we have people over here, then definitely I will keep on going. Otherwise, I will end the stream. Bhai, as I said, Ambrabat is not a problem at this point of time. But then, you know, you cannot become complacent. That's what I said, bhai. That's what I said. नहीं भाई, बेला कोचाप से ज्यादा रिलायबल गेही है because गेही is fit. Bela Kochap is going through, you know, injury issues. I love Bela Kochap. You know, he plays for Germany. I love him. But then that injury problem, he suffered like 2 hamstring injuries last season. And he was out for a significant period of time.
So that's why someone like Bella Kochap. Otherwise, I would love Bella Kochap over here. And he will be available for like 20 million. Exactly. It will take some time. I don't think so. I think Ambrabat will be, our last signing of the window at the same point of time. Okay? After that, we will start selling our players. It's as simple as that. At this point of time, in terms of buying a player, Ambrabat and our window will be done. With Ambrabat, we will end up spending almost 200 million, 205 million. We already have received 20 million from uh, the deal for Elanga as well as deal for, 25 million. 25 million for Teles and Elanga. So we are good in that regard, and we will sell the players after that. No, bhai, no outrageous signings. Rubbish link. Alaba was rumored, Anita Bhaiya. Absolute BS. That's the thing I'm saying, Otaku. Player, I am not saying a player is bad. I'm just saying he's not worth 70 million. He has not done anything that will put him in the bracket of a 70 million player. If he's available for 40 million, even 50 million, we should take the risk, but not for 70 million. We don't have any backup. Maybe Todibo. No one else. If we get Amrabat, we will have to sell. We sell before we buy him, or we sell before after we buy him, but we have to sell. We have spent, we are already in surplus. We have to sell. Otherwise, our books won't be balanced. We have a budget of 120 million pounds plus sales. So far, we have spent 47 on Onana, 60 on Mount, and 70 on Hojlund. So that's like 177, out of which we have got back 20. So we are still in surplus by 37-40 million almost. Johnny Vance, for a free agent, I will take Johnny Vance, as I said. Now that Maguire is staying, in my opinion, we should keep Johnny Vance. Johnny Vance fourth, bhai. He will be like fifth or fifth choice. But for experience, for cover, we can take someone like Johnny Vance. He is a free agent. It's not gonna harm us, and he will be on a very basic salary as well. Chalo. My Pedula has been absolutely spot on so far when it comes to the transfers. Okay? Pedula, Italian transfers ke market mein at this point of time, he has been very, very good. So I am taking his word. Simple. Fair enough. Well said, Niketan bhai. Otaku, that's the thing with small clubs. All right. So what happens is, for their star players, they want the premium. For other team players, they want to pay the minimum. So they made a bid of 20 million. We rejected straight away. They made a bid of 40 million for Gallagher, but they are not willing to pay that much money for McTominay. And McTominay is more accomplished, more experienced than someone like Gallagher. Delvin Bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining. Guys, those who want to connect on social media, my Insta as well as my Twitter handle is pinned in the comment section. Just click on it and you guys can be on my social media handles and we can talk about it. In the meanwhile, we are just 15 subs away from 6,300. Come on, guys. We have to keep pushing. Come on. I beast ho na ho, he can be a very good player for them. The profile suits McTominay's signing. And they have 105 million.
West Ham. So let's see. सोमा भाई देखो पता है क्या होगा? It can go into two ways. You know, it can go into two ways. So either they will end up building, the name for themselves, get academies, get the coaches over there to train those kids, or they will be like another China model, totally fail. Ratan bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining. Bhai, Ramsdale, Ramsdale is like a, it's like a tortoise, in a rabbit race, to be very honest. He cannot compete with the likes of Onana, Ederson, Alisson. So Arsenal fans, we know they are deluded, right? They are they are outright deluded. So as you said, 2 days back, Ramsdale was the best keeper in the Premier League. Now, Onana is the best keeper in the Premier League. So I think Ramsdale will be gone in a year or two. If they sign Raya, they will let go of Turner first. And then I think Raya will be their first choice. I don't think Raya is going to be sitting on the bench with Arsenal. He is not going to sit on the bench, being a 40 million signing. So let's see. Brentford, they are not budging from their price. They definitely want 40 million. The negotiation is on. So let's see. And as I said, if Brentford gets 40 million, they should definitely try and get someone like Henderson. 25 million, he will be all yours. And with this, guys, I will be ending tonight's stream. If you have any questions, anything that you think I didn't cover, I am here. Ask. Otherwise, I will be leaving. I will see you guys tomorrow for the watch along in the morning, and then at night. Then at night as well, we will discuss as well. So if you have questions, keep asking. I will keep on answering. No issues at all. Yes, Disasi to Chelsea is done. De Gea to Bayern is a possibility. But it's nothing concrete yet. Bhai, I see Henderson deal falling through. The reason being, Nottingham Forest are absolutely deluded. First, they said we want him on a loan. United said okay. United said obligation to buy. And now they are saying 30 million. And they are saying if he plays 30 games, then only obligation will come into place. Otherwise, it's not going to happen. So it's absolute rubbish deal. We are in loss situation. आशीष भाई वही वाली बात है, समोसे में आलू बिहार में लालू, ये साले ग्लेजर्स जाने का नाम नहीं ले रहे. The bid is on the table. They are not rejecting it. They are not accepting it. Why? They are looking at a backup. They are not taking De Gea as a number one. Why? Because their CB got ACL injury. So that's why they acted quickly and they got a CB in their team. भाई वर्ल्ड क्लास तो वैसे भी नहीं आना यार. देखो सऊदी से वर्ल्ड क्लास तो नहीं आएगा. They have good players, but they are not going to compete against the likes of Europeans. Simple सी बात है. They will have to invest, and they will have to invest heavily, from the scratch, to even be competing in the World Cup, for quarters, for pre-quarters. अभी तो ग्रुप स्टेज से ही नहीं निकल पाते. UCL ड्रॉ में टाइम है भाई. UCL ड्रॉ में टाइम है. I will be here जब भी निकलेगा. Most likely it will be in August. 31st August के अराउंड होएगा UCL का ड्रॉ. So let's see how it goes. And on this note, guys, see you tomorrow in the morning, 5:40 for the watch along against Dortmund, and then at 10 p.m., which is our standard time, to meet up. I will see you guys as well. So, भाई चले गया, चला जाए क्या, चले गया. भाई देखो दिसासी वही वाली बात है ना यार. गौरव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. They wanted a CB. Fofana is out. They acted quickly. They got the CB. कभी भी हो भाई, द प्री सीजन विंडो जो है ना, अभी जो हमारा विंडो है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. तो वो कभी भी हो भाई. 15 मिलियन हमें मिल जाए फ्रेड के, दैट वुड बी ग्रेट. उससे ज्यादा फ्रेड के कोई नहीं देने वाला. इट्स एज सिंपल एज दैट. चलो समीर भैया, गुड नाइट एवरीबॉडी. See you in the morning and then see you at night as well. Have a great night.